Englishman's home in his castle, and ATF Southern Punjab will be pursuing to do just that. After winning 2-2, a rain-struck game brought the end of victory lines for Salman Ali Agha's men. But now they're back at their own turf. Balochistan on a white ball resurgence ever since Yasir Shah got in good form with the ball. Their streak of victory didn't fade since Rawalpindi, and Yasir Shah would be aiming to extend that. It's a game of contrasting forms. Kingdom Valley National T20 Cup continues as Balochistan is taking on the home soil favourites ATF Southern Punjab, live from Multan Cricket Stadium. So far we've seen some exceptional games. ATF Southern Punjab would love to turn things around. It is their castle and they are the kings. Balochistan, a very steady and stable proceedings for them. They had few hiccups, but it looked like they would love to make a comeback. Toss was won by ATF Southern Punjab and they have decided to ball first. That's how the lineup looks like. Balochistan, same. We've got 3 changes for Southern Punjab. Good to see Shoaib Maqsood back. Umar Siddique and Yusuf Baba will have their first outing. I've got Ali Yunus with me. Ali, should be a good game, good contest. Absolutely. I think Southern Punjab, much needed changes. Shoaib Maqsood coming back. Umar Siddique, he will be the wicket keeper today. A very good change also. Yusuf Baba, another left hand, very solid player. And they've decided to bowl first, so they will be chasing. They've strengthened their batting lineup, so this will go in their favour definitely. But they must not forget they're up against a very formidable side of Balochistan. It has been decent surfaces in this Multan Stadium. It looked like a hard track out there. Slightly on the slower side you might say, but batters have had a good outing there. Runs are up for grabs. Any batter who might apply himself in a better way is going to get runs. Bowlers, well, they need to work hard, but disciplined bowling has always paid off. Yeah, the victory for Central Punjab, it just balanced out things between the last two. 4 points for Central, 4 for Southern Punjab. Khyber Pakhtunkhwa, although they lost their game against Central, but they're still at the top with 10 points. Balochistan to follow, Sindh and Northern in the middle. This will be a very interesting game. If Southern Punjab wins this one, then will be 3 teams on 6 points. That will really open up this tournament. The officials overseeing the proceedings in the middle, Tariq Rashid and Shoza Braza, making sure everything is fine. The men in blue shirts, they should have a new perspective coming into their home soil. They've had their fair share of problems. Some good performances, well led by young Salman Ali Agha, captain. On the home side, ATF Southern Punjab, they would know a bit about this ground. They've made few changes, they've decided to bowl first. That's a good decision. The 2 openers, the very talented Hasibullah and the very experienced Asad Shafiq. Hasibullah has been in superb form, scored 72 yesterday. Asad Shafiq scored 40 odd runs, a good partnership of 96 up front. They would like to start from where they left. It's a very good lineup as far as Balochistan is concerned. But you can expect few surprises from ATF Southern Punjab. Like we did in the first game, when Central Punjab surprised, rather shocked Khyber Pakhtunkhwa in the first game of the day. Let's see if Southern Punjab can do the similar sort of effort against this big side of Balochistan. The very talented Hasibullah, the local lad from Balochistan, just 18 years of age. And look at that record, it's a great start to his career.
30 the average, and strike rate also very impressive, 124. The best of 72 which he got in the last game he played here. The all-senior Asad Shafiq on the other end. It's really great to have a pro. Nasibullah, you can always go and have a chat with him. 92 not out best. Strike rate, yes, you might question, but overall, if you look at recent years, he has evolved as a T20 player. Ali Majid, always dangerous with the new ball. Salman Ali Agha heavily relies on him to provide those early breakthroughs. Best of 2, giving away 22. Yeah, he has something about him, that X factor that we always look for in T20 cricket. He gets on, but he's a better bowler to a right-hander. But here, Hasibullah will face Ali Majid Shah. Plays the call, the regulation field. Long on and deep square leg. Straight away, right on the target. Southern Punjab have dropped their wicketkeeper batter, Zishan Ashraf, and they brought in another wicketkeeper batter, Umar Sadiq. I think that is an excellent change for them. Just a dash outside off stump. You have to be very careful. Hasibullah loves that area, the point. Anything behind square, he'll put it away. Edged, and it's beaten the fielder. Off to the mark with a boundary. That's what pace does. Outside the off stump, the margin of error is very little when you're somebody like Ali Majid Shah. It was a thick outside edge. Look at that, it raced away towards the boundary line, and this outfield is lightning quick. Disappointment? Yes, rightly so. He's very effective when he is bowling within stumps. Don't allow anything outside off stump to Hasibullah. That's better, beautifully bowled. What a follow-up delivery. Top bowling. That is what you want to see from Ali Majid Shah. If he can get those areas right, if he can be consistent on this line and length, he can be very lethal, I tell you. Because it doesn't turn the ball much, gets on. Another one, just testing Hasibullah. You have to be very careful going on back foot. Seems like he's seaming the ball. Bowler like a fast bowler. Oh, that's brilliant. What do you do about this? First of all, cover the line. He's slightly opening up. Trying to steal a single, it's not available. Good over to start with. Just the unlucky boundary for Ali Majid. Balochistan 4 without loss. Checking the stumps. Tariq Rashid, 80th Southern Punjab. They have the ability to upset the opposition. Sameen Gul now will start the proceedings from the media end. He's a decent pacer. We've seen Hunain Shah in the early game, has impressed everyone. Yeah, you say decent. In my opinion, he's more than decent. He has this habit of picking up wickets. I just love the line that is written right at his back for the flood victims. Definitely, we all should be contributing towards that great cause. Everyone in need, in help, we should always be looking to do that. That's a great sign. Slip for Asad Shafiq. It's a wide first slip, almost second. Look at that, that's a great gesture. Please donate to the flood victims. We are all in this together. Slightest of help can make a huge difference to one struggling out there. That's the sight we all need to see from players.
Good hit. Right on the target. Good length. Yes, I mean, Gul would do that. He'll keep hitting that hard length. He'll keep coming at you. It's not going to be easy, although it's a fantastic pitch. But if you got experience behind you, like Waqas Maqsood had in the first game, I think he was the one who set up the game for Central Punjab. Same is expected of Sameen Gul with all that experience. A slip in place, and there's a deep square leg, and third on the boundary line. Oh, just teasing a Shafiq outside off stump. He's on the move. We've seen him dismissed in similar occasion early on. Not maintaining his balance. Usually a great timer of the ball, but have a look at that. Yeah, pitched up just that teasing length, where the batter thinks he can drive, but he can't. That's the Shafiq, very experienced batter. What is he thinking? Hasn't had a great tournament, but we all know what sort of innings he can play. Probably not a stable balance in the crease. That's more better. They'll keep targeting the stumps. That's what ATF Southern Punjab has done throughout this tournament. He's another one player to watch out for. Nice glasses too. Suits him. It's very good. Very handsome man. And a good performer for Southern Punjab too, Ilyas. He's bowling well, he's batting well, he's catching well. Everything is working for him. He made quite a comeback, Ilyas, and it's never easy for the fast bowlers. Outside, off stump. Really couldn't get the connection. Will open his account with a single. I believe Southern Punjab probably now the time that we come to Multan, have got that combination right. Like Central Punjab did in the first game, bringing in another extra batter in the middle order, Yusuf Babar. Very formidable, very solid. Then you got Umar Siddiq back in the side. So I believe this is a better team that we saw earlier in Rawalpindi. This has a better balance in it. And they've got X-Factor in form of Ali Majid Shah and experienced Sameen Gul, Salman Ali Agha. He's due some runs. Don't forget Sueb Maqsood. Beg your pardon. Outside off stump, teasing him, bringing the slip fielder into play. He's vulnerable. It's one of his strengths, but Hasibullah is also vulnerable outside off stump. He'll learn. Just a youngster. But the good part is that he's committed to learn. This is what we see. He likes batting. He likes scoring runs. He's been player of the match a couple of times. He's got a great future for Pakistan. Down the track, goes hard on it, and will find a boundary. Spoiling the over for Sameen Gul. Yeah, breaking the shackles. Boundary was needed. Good use of the feet. Came towards the ball. That's a good shot. Right. Although there was a fielder at deep point, but he timed it beautifully to get the first boundary. After two, it's 9 for none. He's always going to go after the bowlers. That's what his nature is. And Sameen Gul wasn't happy. No fast bowler likes a batter coming down the track. Especially when you're that junior. Hasibullah is just a youngster. Sameen Gul has been around for a while. How dare you? Have you ever done that to a fast bowler in your playing era? A lot of time. Did you? Okay, we'll come back to that. Good use of the feet, pushing hard for the second one. It's long boundary and a fumble allows that. ATF Southern Punjab, they can't afford these things. They want to beat Balochistan.
The youngster, what are you doing? Sharoon Siraj should have been only one. And at that point, they were settling in for one, and then he messed it up. And again, but this time it's going to travel to the boundary. It's been timed gloriously by Asad Shafiq. Great use of the feet. He knows that he will be bringing the ball into him. Look at that. Just covering the line. Nice use of the wrist. Placement has been perfect. Result also perfect. And that's his attribute, timing the ball. Whenever he tries to go hard, never found a good connection. That's good batting. He's testing the fielders. Yet again. And again the same results. Asad Shafiq is not going to hold back. That is experience for you. Asad Shafiq again using his feet. He realizes that there is no fielder there at mid-wicket. All he has to do to go past that fielder at mid-wicket. Just over his head. Placement is very good. The best thing is that he has a very stable head. Even when he's using the feet. Never falls over. And superb batting from Asad Shafiq. Had to change the length. And this time, make it 3. Fantastic. There was a change in the field, but the line again on towards the offside. And with this pace, at that line and length, you're always asking for trouble. And we know Asad Shafiq, he likes those shortcut shots. Right in between the two fielders. That's the mind game, coming down the track, pushing Ali Majid to change the length and pick up a single. That's brilliant batting, and that's what experience reflects. Trying to dominate 80th Southern Punjab's ace bowler. Ali Majid Shah will have to learn, and learn pretty quickly, because at this level, with this pace, if you get it slightly wrong even, you will be hit for boundaries. Oh, brilliant. They're asking a question. Decent glove work behind the stumps by Umar. Have them managed to get the breakthrough. Hasibullah, it'll be a big wicket for them. I heard someone say, out ho gaya. So they're very confident, this southern side. That is an excellent piece of wicket-keeping. He was so quick, his hands. Let's see if it goes in his favour. If it goes in the favour of Southern Punjab, it will go to Umar Sadiq, the wicket-keeper. No problems there. That's what a specialist keeper can bring. Umar Sadiq having his first outing. There's a question. Oh, that's brilliant work. Swift glove work from Umar Sadiq. And I think Hasibullah will have to take the walk. We'll wait for the official decision. That is excellent glove work. That is marvellous. Quick hands, look at that. Yep, that's on the line, and the line belongs to umpire. Quick hands, very nice. Good stable base. And nicely done. Hasibullah, the first one to fall for Balochistan. Never get going. Has to take the walk on 8. And Ali Majid has redeemed himself. You know, this is what a specialist keeper can do. He can create chances out of nothing. It was just the slightest of margins, and he grabbed it. Wonderfully done by Umar Sadiq. Hasibullah scoring 8 runs. It's 24 for 1. Abdul Wahid Bangalzai. He walks in now. The first breakthrough managed by 80th Southern Punjab, courtesy of some brilliant keeping by Umar Sadiq.
that can bring a huge difference to ATF Southern Punjab side. Now you see the importance of a specialist wicketkeeper. They can create chances. I was talking to you earlier that he will create difference, not with his gloves, but with his bat too. He's very solid up the order. Slip being taken out. Hit hard, straight back to Sameen Gul. Ali Majid was way expensive, but the last delivery, he managed to grab the chance, and have a look at that. Very quick, just beaten the outside edge. Slight shift in the weight, dragged him outside the crease, and rest was done by Umar Siddiq. He was troubling Hasibullah outside the off stump. This was not the first time that he was beaten there, but this time, just the greed maybe. He just wanted to score runs, just went towards the ball, and excellent work done by Umar. Apesh, but will travel to the boundary. You have to feel for Sameen Gul. It wasn't timed well, but was picked up with the gap. Another 4 for Asad Shafiq. On the up. It was in the air for just a little while, but away from wicketkeeper. Earning Asad Shafiq another boundary. Have a look at that. That was a little in the air, but away from the fielder. Probably just hanging on to the back foot. Never really came. Just the bat travelling way ahead. That's more like it. Close to the body. Good defensive shot. But Sameen Gul has been brilliant in the areas he's been bowling. Disciplined, consistent. This length. We've seen bowlers struggle to find the length right. But Sameen Gul is very experienced. We saw in the first game Waqas Maqsood using all the experience on a pitch like this, variety. They were all similar bowlers. Sameen Gul, Imran Khan Senior, Waqas Maqsood. Trying to go a little bit hard. That's Shafiq. Just the boundary coming off. 2 deliveries to go. Here's the use of feet. If you want to learn how it's done against spinners, that's one to watch. Asad Shafiq exploiting the field and making Ali Majid to bowl according to his intent. Had to shift those lengths, and that's where he capitalized that over. Apesh, and again safe. He's not timing it well, but he's picking up the gaps decently. Yeah, he's placing them straight. And while liking the fielder, he should be a little straighter. Because we saw earlier Asad Shafiq attempting the same sort of shot, was in the air. There was a cutter. That is why the timing was not quite there. And the placement, lucky for him, it went on the right of Salman Ali Agha to earn him another boundary. Runs matter, it doesn't matter how they come. Just for your own personal satisfaction, your own personal ego, you like middling it. It's been in and out, not quite consistent, just a couple of good 40s for him. He would be hoping to get a big one. Dot to end the over, 8 coming off it. 4 overs gone, Balochistan is 1 down on 32. अली माजिद अपनी
बॉलिंग जारी रखेंगे। उनका ये मुसलसल तीसरा ओवर है। ठीक है शाजी, यहीं पे फिनिश और अब तक की सूरत हाल से दोनों ही टीमों को इत्मीनान होगा, खासतौर पर सदर्न पंजाब को जिन्होंने आज़ादाना रन्स नहीं बनाने दिए, और बलोचिस्तान की उन्होंने कीमती विकेट भी हासिल की, कल के हीरो हसीबुल्लाह की। अली माजिद का जो बॉलिंग स्टाइल है, काफ़ी बात हो रही थी कि बेहतर होता कि उन्हें पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए जाते। आज इस हिकमत अमली पे अमल किया है एटीएफ सदर्न पंजाब ने। फ्लाइट दी आगा ने अच्छा जाकर गेंद को रोका। मंगल सही बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं इनिंग्स के आगाज में ही, और असद शफीक को वो इस वक्त स्ट्राइक देना ज़्यादा ज़रूरी ख्याल कर रहे थे, क्योंकि वह ज़्यादा फ्लुएंट लग रहे हैं। 160 का स्ट्राइक रेट है। और ये अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हुए। मिड विकेट से फील्डर आए हैं और असद दूसरे रन के लिए भी जा पहुंचे। अच्छी दौड़, वो जानते हैं कि मैदान खुला हुआ है और रन यहाँ पर दौड़ कर बनाना होंगे। असद अच्छे फ्लो में लग रहे हैं। बॉल पकड़ेगा नहीं होगा, आजा। बिटवीन द विकेट अभी भी काफी मेहनत और लगन के साथ, गर्मी में भी क्रेडिट देना होगा उन्हें। माजिद की जहां तक बात है, क्योंकि जितना वो ज्यादा खेल रहे हैं उतना ज्यादा वो उनके बारे में लोगों को या प्लेयर्स को जानकारी होती जा रही है और उनके खिलाफ प्लान करना आसान हो गया है। थोड़े प्रिडिक्टेबल हैं, इसलिए शायद वो पावर प्ले में ही उनसे बॉल करवाना चाह रहे हैं। अच्छा इख्तिताम किया, बिल्कुल विकेट टू विकेट और फुल लेंथ पे भी अली ने। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन कंसीड किए, 35 पर 1। इस वक्त 2 दाएं हाथ के बैट्समैन विकेट पर हैं, असद और अब्दुल वाहिद। उसके बाद 2 बाएं हाथ के बैट्समैन आएंगे, शान मसूद अली वगास, और अगर हुसैन तलत अम्माद बट से पहले आए तो फिर 3 लेफ्ट हैंडर्स होंगे। खासी वैरायटी है दाएं बाएं की। हसीबुल्लाह भी लेफ्ट हैंडर हैं बलोचिस्तान की इस लाइनअप में, इसलिए ये टीम अच्छा खेल रही है। तवाज़ुन अच्छा है। मोहम्मद इलियास पावर प्ले ख़त्म होने के बाद अब बॉलिंग करने के लिए पहुंचेंगे। होम ग्राउंड पर वापस आए हैं। बड़ी सपोर्ट मिली थी इन्हें मुल्तान सुल्तान्स के लिए जब ये पहली बार खेले थे इसी मैदान पर। विकेटें ली थी, बहुत ही आला कैचेस पकड़े थे अपने होम मैचेस में, और मुल्तान को दोनों मुकाबले इन्हें जितवा दिए थे 2 दिन में। विकेट टेकर हैं, इकॉनमी रेट 9 से ऊपर का है, इस पे यकीनन इन्हें काम करना होगा। लेकिन दिलो जान से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग या फील्डिंग। इस पिच पर आज सोच यही है कि ये स्टंप्स में गिराई जाए, यहाँ एलबीडब्ल्यू और बोर्ड का इम्कान है। और पहले मैच में हमने देखा था कि रन्स बन रहे थे, लेकिन बैट्समैन को सूझबूझ का मुजाहरा करना पड़ता है, तो गेंद कई बार नीचे रह जाती है। जो स्कोरिंग एरियाज हैं इस पिच पे बनिस्बत रावलपिंडी के वो थोड़े डिफरेंट हैं, और बैटर्स को एडजस्टमेंट करनी पड़ी। उन्होंने ये एडजस्टमेंट कामयाबी से की, उन्होंने अच्छा स्कोर किया अभी तक 2 दिनों में। कट और पुल ज्यादा लग रहे थे रावलपिंडी में, खुसूसन तेज बॉलरों के खिलाफ। यहाँ पर आप थ्रू द लाइन ऑन दी अप ज्यादा खेल सकते हैं, खिलाइयों का इस्तेमाल करके बिहाइंड स्क्वायर भी आप खेल सकते हैं। बॉलर्स का भी टास्क यहाँ पे डिफरेंट है, वो भी अपने लेंथ में और लाइन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर इतना ज़्यादा नहीं है, विकेट में पेस इतनी नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी अपनी लेंथ में चूक नहीं सकते बॉलर्स।
अच्छी गेंद थी इस बार, रफ्तार से की मोहम्मद इलियास ने, लेग साइड में खेलने गए लेकिन लेट हो गए। हालांकि लेग स्टंप की तरफ आप गेंद ज़्यादा कर नहीं सकते, फाइन लेग को जब दायरे के अंदर खड़ा किया गया। ये सदर्न पंजाब की टीम है जिसमें आज कुछ तब्दीलियां की गई हैं। एजाज चीमा इनके बॉलिंग कोच हैं और यूसुफ बाबर को खिलाया गया है जो बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। उमर सिद्दीक एक और लेफ्ट हैंडर जो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। 2 साल के बाद मौका मिला है उमर सिद्दीक को। सुहेब मकसूद की वापसी हुई है, ज़्यादा बेहतर टीम लग रही है। उनकी बैटिंग लाइनअप जो है खासी मजबूत लग रही है। सुहेब की आमद से, उमर सिद्दीक से भी हम ये तवक्को रखते हैं कि वो अच्छी शायद सुर्खियों में अपनी जगह बनाएंगे। शान अशरफ को जो है बेंच पे बिठाया गया, उनका काफ़ी बुझा सा टूर्नामेंट रहा। विकेट कीपिंग में तो खैर वो स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं, लेकिन बैटिंग में भी कुछ खास रंग नहीं जमा सके। यहाँ पे इलियास खुशकिस्मत रहे, दोनों गेंदें उनकी ज़्यादा सीधी थी लेकिन बंगलजई फ़ायदा नहीं उठा सके। असद शफीक ज़्यादा सेट हैं बंगलजई की बनिस्बत। और इसे उठा खेला, गेंद सीधी आकर पड़ी हाथों में और वहां पर इमरान रंधावा थे। और इस तरह मोहम्मद इलियास जिनकी PSL कामयाबियों का हमने जिक्र किया, यहाँ नेशनल T20 कप में भी उन्होंने अनमोल विकेट हासिल की। असद शफीक की सिर्फ एक ही फील्डर थे पीछे खुले मैदान में और उन्हें पिक कर बैठे। आप देखेंगे कि उन्हें बिल्कुल अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। शफीक ज़्यादा सेट थे, ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हासिल किया लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं पा सके। और इलियास खुशी मनाते हुए यहाँ असद शफीक की बड़ी विकेट हासिल की, अच्छी कामयाबी उनके लिए। बलोचिस्तान 38 पर 2। शान मसूद नए आने वाले खिलाड़ी, कल जल्दी आउट हो गए थे काफ़ी अरसे बाद, उनका फेलियर हुआ लेकिन मैच का असल मुकाबला उस वक्त तक ख़त्म हो चुका था, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ टीम को। लेकिन अच्छा है कि उन्हें दूसरा मौका जल्दी ही मिल गया और आज अभी बहुत मैच बाकी है। इनका एवरेज मुसलसल बढ़ता हुआ 27 पर जा पहुंचा है और स्ट्राइक रेट भी 126 से ऊपर का है। एक सेंचुरी भी बना चुके हैं। जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है, अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। यार ये इनका भी होम ग्राउंड है, मुल्तान सुल्तान के ये कप्तान भी रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि इस पिच पर कैसे बैटिंग की जाती है। ये एक खूबी है जो इसमें बहुत निखार आया है इनके खेल में। शान मसूद के ज़्यादा ऑलराउंड बैट्समैन बन गए और अगेंस्ट द विंड ये शॉट खेलने के लिए गए। ये भी वजह थी, गेंद ने उतना ट्रेवल किया नहीं और सीधी हाथों में गई। आप जो कह रहे थे कि हिलना भी नहीं पड़ा इमरान रंधावा को। असद शफीक को खासा मलाल होगा, फॉर्म में थे और ज़्यादा रन्स बने नहीं इस पावर प्ले में। 39 पर 2। ये अंपायर ने शान मसूद की तवज्जो शायद उनके हेलमेट की तरफ दिलाई है, उस पर स्टिकर का मुमकिन मसला लग रहा था। इन मामलात लगता है कि तय पा गए हैं और यहाँ आपको कई बार हाथ नर्म रखना पड़ता है।
तो लेफ्ट आर्म स्पिनर अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे। हसन खान एक और अच्छे क्रिकेटर हैं। हसन खान काफ़ी मैचेस खेल रही हैं इन्होंने T20 के, 30 विकेटें हैं। बहुत ज़्यादा ये विकेटें लेते नहीं हैं, कोशिश यही होती है कि रन्स रोके जाएं। इनको रोल इसी तरह का ही दिया जाता है, ये बैटिंग कर रहे होते हैं तो मैच को फिनिश करें। ज़हन अब्बास की ये कोशिश गेंद रोकने में कामयाब नहीं हुई और 4 रन। शान मसूद ने आते ही आड़े हाथों लिया हसन खान को, रिवर्स स्वीप। ऐसा लगा कि काफी फुल थी गेंद, मुश्किल से बल्ला लगा पाएंगे लेकिन अच्छा टाइम कर गए। जी हाँ, और बाजार ऐसा लगता था कि शायद इतनी अच्छी पोजीशन में भी नहीं है। स्वीप करते हुए गेंद काफी आगे गिरी हुई थी। शान मसूद जो हैं इन दिनों उनकी नजरें इतनी औकाबी हैं, इसके बावजूद गेंद को बल्ले पर लेने में कामयाब हुए। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन इसका मौका नहीं होगा। समीन गुल ने एंटिसिपेट किया, बाउंड्री लाइन से भागकर आगे आए। फील्डर्स को मसरूफ रखेंगे इस मैदान पर। आप देखेंगे शान मसूद जो हैं, अगर ये यहाँ लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो ये थकाएंगे यहाँ सदर्न के फील्डर्स को। सान की बात कर रहे थे, ज्यादा विकेटें लेते नहीं हैं लेकिन उनका कैरियर लगता है कि एक जगह पर आकर रुक गया है। यहाँ से नीचे जाने से बचने के लिए उन्हें एक डिपार्टमेंट अपना ऐसा करना होगा कि उनका नाम टीम शीट पर पहले लिखा जाए उस डिपार्टमेंट में, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग। उम्दा स्वीप शॉट मुश्किल होगी फील्डर के लिए। जी हाँ, 4 रन्स मंगल ज़ईम उन्होंने इस बार हाथों हाथ लिया। ये लैंड डिलीवरी थी और ये शॉट इनकी पहली पसंद है स्पिनर के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने बजा कहा। और मैच से पहले जब अपने ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो इस स्वीप की 2-3 वेरिएशंस ये हर मैच से पहले आकर ख्याली तौर पे ही खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी फेवरेट शॉट्स में से एक है और इसकी 2-3 वेरिएशंस हैं इनके पास। 2 की कॉल है लेकिन ना कर दी शान मसूद ने। देखा होगा ये स्लॉग स्वीप फ्रंट ऑफ स्क्वायर भी खेलते हैं, लैप स्वीप भी खेलते हैं। यहाँ अच्छा कलाइयों को रोल किया इसलिए बॉल जमीन के साथों साथ गई। छक्का भी लगा सकते हैं इस शॉट पर। ज्यादा स्लॉग मिड विकेट की तरफ उसी वक्त करने के लिए जाते हैं जब गेंद इनको आई लाइन के बाहर नजर आती है। स्ट्राइक शान मसूद के पास ही रहेगा पिछले ओवर की तरह। अगले ओवर में भी 7 के बाद 50 पर 2। ये अली माजिद के सपोर्टर्स से जो लगता है कबीर वाला से आए, ज्यादा दूर नहीं है कबीर वाला का कस्बा। यहाँ मुल्तान से ये नई दरियाफ्त हैं इस मुल्तान रीजन की और सदर्न पंजाब की, जिस पर फख्र होगा सदर्न को। पिंडी लेग में तो बहुत ही कामयाब साबित हुए थे सलमान अली आगा। 32 विकेटें, 22 की एवरेज। कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं स्पिनर के सामने। कभी कभार उन्हें स्टंप्स अपनी दिखा देते हैं। शान मसूद कभी कदमों का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स स्वीप कर देते हैं। परेशानी हम वक्त ये खड़ी रखते हैं, सोचने पर मजबूर रखते हैं। जब से ये रिवर्स स्वीप का ऑप्शन आया है अपने लिए ऑफ साइड भी खोल लेते हैं, ऑन साइड भी। कप्तान को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे शायद एक आध फील्डर कम है फील्ड में, लेकिन वो रेंज ज्यादा है उनकी। और वैसे भी जब थर्ड मैन पर चौका लगता है तो कप्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद फील्ड को खड़ा करना। और अभी भी देखिए तो डीप कवर पे एक स्वीपर है लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे कोई फील्डर नहीं है। रिंग में 2 फील्डर्स हैं ऑफ साइड पर।
आएगा, बिग शॉट आएगा, बिग शॉट आएगा, ऊपर आएगा चेरून। खासा बड़ा स्कोर आज हमने देखा जो सेंट्रल पंजाब ने बनाया खैबर पख्तूनख्वा की मजबूत टीम के खिलाफ, और उनने अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। और सवाल यही है कि क्या सदर्न पंजाब की टीम जो है वो बलूचिस्तान को अपसेट कर सकती है। तारिक रशीद जानते हैं कि गेंद मिस कर जाती, विकेट कीपर वाज़े तौर पर जा रहे थे लेग लाइन के बाहर। तो एक और एक दिलचस्प सा सवाल है शाहजी, मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं कि शान मसूद मुल्तान सुल्तान के बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं और बहुत ही उनकी कारकर्दगी हैं। आज जब वो सदरन के खिलाफ खेल रहे हैं तो सदरन के सपोर्टर्स को कैसा लग रहा होगा? चल बॉल आगा, वाइट बॉल। बिल्कुल, अब मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह हो गया है कि आप किसी भी एक टीम से वाबस्तगी रखते हैं, ज़्यादा तवील अरसे तक हो नहीं पाती, इतने फॉर्मेट्स हैं। जाहिर है आज उनके जो खैर ख्वाह हैं वो शान की परफॉर्मेंस के लिए तो अच्छा विश कर रहे होंगे। इस बार सामने पाए गए विकेटों के तारिक रशीद का यही ख्याल था। शान मसूद को हैरत हुई, ये गेंद नीचे रह गई थी, लेग साइड में खेलने के लिए खुद को कमिट कर लिया था, क्रीज का इस्तेमाल किया था। इम्पैक्ट ऐसा लगा कि ऑफ स्टंप के बाहर है, लेकिन अंपायर तारिक के ख्याल में ऐसा नहीं था। शान मसूद काफी सरप्राइज हुए इस डिसीजन से, लेकिन उन्हें जाना पड़ा 9 रन बनाकर 8 के बाद 55 पर 3। थोड़ा सा बाहर होएंगे शाहजी, जमीन थोड़ा सा बाहर हो, थोड़ा 55 for 3 and 8 overs bowled. Little even Stevens, if you really ask me, because 3 wickets down, Balochistan would be thinking could have done better with Shan Masood and others around. But a score is a bit an okay stage. They can accelerate. They will need to get in the excess of 160. They'll be relying on Bangalzai. Ali Yunus alongside me. It's been a rough morning for KP. That's the wicket. Salman Agha taking Shan Masood's wicket. It was a strange thing. I'll talk to you about this just after this ball. The ball is hit. Nothing. It's the bat brushing the ground. I can't remember the post-match presentation. Was it Khalid Usman or was it Qasim Akram said that it's not easy. Stroke play is not easy out there. I think it was Khalid Usman second time around. That especially with the spinners, we saw how Maz bowled and how the young Ali Asfan bowled. So watch out for Yasir Shah. Making a comeback, Ali Waqas. After 5 years in this competitive cricket, because of his health issues, he was hospitalized for a bit and then had to leave cricket. Now he's making a comeback from Faisalabad. This boy is. Well, coming back to your question, it's certainly not easy as it was yesterday, because we've seen the ball from spinners gripping a bit, getting turned a bit, and the fast bowlers who are smart are surviving. Otherwise, spinners are making it difficult for the batters. That's going to be a 4. Using the pace on the ball. Well, this particular strip is
almost 20-25 feet away from the one that played yesterday. It's the same square, yes. Runs are here for sure. The way Tayyip Tahir batted, the way Faizan batted. He just told us about Ali. Good to see him back in action. He'll be happy to take off with that boundary in his personal score. Balochistan reaching 60. He's in this side in place of Haris Sohail. He's been given the opportunity. 9 overs gone, 61 for 3 Balochistan. Straight to the man. The idea was all right. Salman Ali Aga into his second over. He's just given away 5 runs and got that 1 wicket. He's been prolific with the ball, Salman Ali Aga. He would like bowling on this pitch, I tell you. Gripping a bit, holding a bit, and it comes to spinners. And the fast bowler is also using all that variations. It's doing a bit. That's a big one, right into the gap of 2 fielders. A boundary for Ali. Just picked up nicely and placed it beautifully right between the 2 fielders. Ali Waqas. There's appeal for it. How well Umar Siddique has done behind the stumps. Wonderful. This one. Good decision. Dot to finish the over. 10 gone, 65 for 3 Balochistan. Southern Punjab would be a happier side at the moment. Well, you can be a happy man too. Kingdom Valley, a royal lifestyle if you want to have. You can go to their Facebook page and get a chance to win exciting prizes. And you can be the next winner. Ali has promised to take us to Kingdom Valley after the end of this tournament. We'll go and check the place out. We heard a lot about it. I'm expecting some crowd at the end of this day and probably tomorrow when we start evening games. And this is the home team game, so there will be people coming in after working hours. Don't forget 3 o'clock start of first game, 7:30 start of second game. Tonight the big final of the Asia Cup, Pakistan versus Sri Lanka, and another big game in front of you. The way Bangalzai is going about his innings, you just get a feeling that it's not as easy as we may think from up here about stroke play. He's a fluent batter and he really likes to make those runs on either side of the wicket. But today it's just not coming as we saw it. Yes, if you're going for those big hit slogs, yes, they are coming onto the bat. But we didn't see anything from Hasibullah. Talking about the batsmen who are technically sound, a little more textbook. You see, you hit things hard, it comes on. Back up, back up, back up, back up. Well, other than Faizan and Tayyip Tahir, almost every batter has struggled. I mean, they were outstanding.
Tayyip Tahir given an opportunity, he was dropped, and after that he was brilliant. The way he hits the ball, probably I have not seen anyone hit the ball that hard as he hits, at least in this national T20. Again, timing not quite there. That's not the first time that we're seeing this. That is why probably Southern have strengthened their batting lineup. But yeah, the difference between the batters have been Fizan and Tayyip Tahir. They were quality. Other than that, everyone has struggled. Even KP has struggled. Deep square leg, mid-wicket, long on in place for Bangalzai. A fielder at deep cover too. I keep repeating myself to the extent that I may sound boring to myself. You've got to finish the over well. You've got a brilliant over, 5 of it. Don't get yourself hit for a boundary or a big shot because of a bad ball. You bowl something good and the batsman goes extraordinary after you, then something else. But don't bowl a bad ball. Keep the pressure on, because the momentum is carried into the next over for either side. In the air, opportunity should be taken. The captain under it. And yes, Ali has to go. That's the end of another very short stay at the crease. Wicket number 4 falls. The pressure of scoring runs. They were struggling to get those big ones. But Ali was doing all right. But the pressure from the other end, Bangalzai 17 of 13 got to him. Have a look at that. He was always going away from it. And if you try to hit cross, it's meant to go in the air. And Salman Ali Agha is not dropping those. 12 runs for the returning Ali Waqas. It's 70 for 4. Santalat, somebody who's looking for some form, looking for some runs, and this is a good opportunity. He's got enough overs left. He can get his eye in. That's a good record. 30 the average, excellent. 124 is the strike rate, the best of 80. He's got the skills. He just needs to transform that skill into performances. Earlier I thought he was playing way down the order. One to finish the over. Now that's how Ali Waqas went. We were told that anything that is going away from you, if you try to hit it cross bat, it's always meant to go. Yeah, that was a better idea. If you could have done with straight bat, it might have paid off. 71 for 4. Salman Ali Agha, 2 overs, 1 for 9. Good figures. And that's what he did against Central Punjab. Got 5 wickets for 10 runs. That was brilliant. That is live, by the way. And the best figures by a captain, 5 for 10 at this level.
in Pakistan. Just 3 overs. That is excellent. He's been in excellent bowling form. Not getting runs though, but he is contributing with the ball. Well, you can say that he fancies bowling. He's enjoying it. What kind of score do you feel will be a good score from here on? We're talking about 11 overs gone, 72 for 4. What would be a challenge for Southern Punjab to chase? And it's the last wicket of Ali. What do you think? Well, from here on, if they can get to 150, they'll be happy. Because 72 for 4, 12th over. It's not a easy thing to get to that target, and we can see the ball is holding up a little. And they're losing wickets on regular intervals. So yes, from here on, if they can get to anything over 150, they'll be happy. But that will, I don't see it the safe runs even, because Southern Punjab has added extra batter. Yeah, so what's the safe one? That's what I'm asking. 200. Why not 500? Got to be realistic. Yeah, be realistic. Can't be 200 in the 12th over. You started it. 74. You're saying 150. So you're talking about approximately 76, 77 runs in the remaining 8 overs of 48 deliveries. I'd give them a पचहत्तर पे 4 बलूचिस्तान 12 ओवरों के इख्तिताम पे। बहुत ज़्यादा फाइन खेल दिया, कोई मौका नहीं था यहाँ पर सोहेब मकसूद के लिए। इस तरह की बाउंड्रीज की ज़रूरत है अभी और भी, और साथ साथ पार्टनरशिप की भी। पहले खासा आगे चलते हुए गए, फॉलो करने की कोशिश की इमरान रंधावा ने, लेकिन अच्छा रब देखने में आया। पेस का इस्तेमाल करने वालों में से हैं बॉलर की हुसैन तलत। आज को पार्टनरशिप अभी तक नहीं मिली जो बलोचिस्तान के टॉप ऑर्डर ने कामयाबियां हासिल की अपनी टीम के लिए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इनके नंबर 1, 2, 3, 4 की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहे। और शानदार शॉट इस बार खूबसूरत तरीके से कट किया। हुसैन तलत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। टॉप ऑफ द बाउंस खेला, इसको जल्दी रीड कर ली थी लेन। इमरान रंधावा मजबूर हुए थे क्योंकि पिछली डिलीवरी पे उन्होंने स्कूप खेला था। इस बार थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इस सरफेस पे अगर आप जगह दे देंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप तो इतना ही जोरदार शॉट लगेगा। थ्रो ज्यादा तेज कर दी गई, इससे रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक और ओवर थ्रो का मौका हो सकता था, लेकिन फिर रन लेना गवारा किया नहीं। रंधावा ने बोल दिया था कि फिर उनको कि थ्रो ना करना, क्योंकि पीछे बैकअप नहीं था। फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ओवर थ्रो
पे रन बनने में कामयाबी हासिल की बंगलजई और हुसैन तलत ने। इन दोनों का बाहर रहना बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पार्टनरशिप ज़रूरी होगी। रन्स आ रहे हैं लेकिन विकेटों का नुकसान ज़्यादा हो गया। दूसरा रन लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की बंगलजई ने, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। मिड विकेट से शारून, जिन्होंने पिछली गेंद पर ओवर थ्रो की थी, इस बार उन्होंने ज़्यादा तेज़ थ्रो करना भी गवारा नहीं किया। अच्छे फील्डर हैं शारून सिराज, और अच्छी बैटिंग भी की उन्होंने रावलपिंडी में। ये बहुत आंखों के भाए देखने वालों की। स्पिनर्स पर अपनी धाक बिठा दी थी। गेंद फाइन गई लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं, इससे पहुंचने का मौका मिल गया। थर्ड मैन पर समीन गुल थे। निस्बतन वीक लिंक है इस बॉलिंग अटैक में इमरान रंधावा, और आमतौर पर ये कम देखा जाता है कि 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल कर लें, इसलिए यहाँ पर कोशिश हो रही है बंगलजई और हुसैन तलत की जानिब से कि इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लिए जाएं। कंसिस्टेंट नहीं है, ओवर में 1 या 2 ऐसी गेंदें दे देते हैं जिस पे बाउंड्री आसानी हासिल हो जाती है ऑपोजिशन को, और ऐसा ही अहवाल कुछ इस ओवर का भी रहा है। 2 चौके हासिल करने में कामयाब हुए। इस तरह क्रिकेटर हैं, कुछ बैटिंग कर लेते हैं, कुछ बॉलिंग कर लेते हैं। बंगलजई बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। कल हसीबुल्लाह ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली थी और अपनी टीम की जीत में कलीद साबित हुए। 87 पर 4। टॉप ऑर्डर आज कुछ ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब नहीं हुआ। शफीक ने तेज़ी से स्कोर ज़रूर किया लेकिन आज टाइमिंग उनकी कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी। बंगलजई पे जिम्मेदारी आया था। इशान मसूद और अली वकास दोनों जल्दी डिसमिस हुए। अभी बैटिंग बाकी है। हुसैन तलत मौजूद हैं, यासिर शाह, माद भट्ट, काशिफ भट्टी भी बैटिंग कर लेते हैं। एक डिसेंट टोटल पोस्ट करना पड़ेगा लेकिन मेहनत दरकार है। शान मसूद का जो आउट होना था से शफीक, शान मसूद तकरीबन बैक टू बैक आउट हुए। उसके बाद से दबाव आया है इस टीम पर, और क्योंकि आज बैटिंग करने के लिए शान के बाद यहाँ पर भेजा गया था अली वकास को। वो बहुत अरसे के बाद क्रिकेट में वापस आए हैं, उनसे फौरी तौर पर आप बड़ी तवक्कुआत नहीं रख सकते थे। स्पेशलिस्ट जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, ये आखिरी पेयर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बंगलजई जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ये बलूचिस्तान में पैदा होने वाले क्रिकेटर्स हैं, तो बिल्कुल नौजवान, अब वो दिखा रहे हैं अपनी बैटिंग का हुनर। हसीबुल्लाह का हमने पहले भी जिक्र किया। बंगलजई और हसीब, ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इस बार उठाकर खेला और उछलकर अली ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे खासी बाला थी। ये खासा है बंगलजई का, ये वो हमलावर होते हैं। फुटवर्क लाजवाब था आगा के खिलाफ। पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छी लाइन पिक कर ली थी, पिच पे पहुंच गए थे और बासानी उसको बाउंड्री के पार पहुंचाया। एक और चौका नहीं लग पाएगा। कोशिश इनकी थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री हासिल करते। ऐसी जा रहा इनिंग्स अब खेलनी पड़ेगी क्योंकि ओवर्स अब कुछ ज़्यादा बाकी रह नहीं गए। ये वो छक्का था। यहाँ बड़े स्टाइलिश तरीके से ये शॉट खेला घुटने के बल। बंगलजई ने खास ताकतवर बैट्समैन है। अच्छा आगाज हो गया है इस ओवर का, अब इसको मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। तो बंगलजई एक बार फिर वार करेंगे। सलमान अली आगा इस बात से आगाह हैं।
स्वीप शॉट भी अच्छा खेलते हैं, जिस तरह ये कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और इस बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की और उसी में अली माजिद ने ये कैच जा लिया। 2 गेंदे पहले जब छक्का लगाया था तो अली माजिद की पहुंच से वो गेंद दूर थी, इस बार बिल्कुल नहीं। अच्छा रनिंग कैच जाकर लिया। कैपिटलाइज करना चाह रहे थे इस ओवर को, लेकिन सलमान अली आगा काफ़ी समझदार बॉलर हैं। इस बार लेंथ भी नहीं थी, पेस भी कम रखी और क्रीज से ही खेलना चाह रहे थे। एक और छक्के की ताक में अपनी विकेट गंवा बैठे और आखिरकार सलमान अली आगा को कामयाबी हासिल हुई इसी ओवर में। 25 बनाए बंगल जई ने, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। 95 पे 5 बलूचिस्तान। आगा 2 बॉल अच्छे कवर हो जाएगा। अच्छा नीट फुटवर्क, हुसैन तलत डबल फिगर में पहुंच गए, लेकिन अभी बलूचिस्तान को ये बड़ी चोट लगी। देखिए सलमान अली आगा जो हैं ये विकेट लेने का इनके पास गुण है। छक्का लग चुका था फिर भी आमादा किया, बैट्समैन को न्योता दिया कि आप फिर हिट लगाइए। गेंद को ज़रा सी हवा दी, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं ले पाए मंगलजई। सीधा शॉट खेलने जाते तो शायद बेहतर कनेक्शन बनता। अमाद बट की आमद हुई है। अब बलूचिस्तान थोड़ी मुश्किल में ज़रूर है इस वक्त, लेकिन बैटिंग ये भी कर सकते हैं। ये फाइनल लेग को चली जाएगी, खासी तेज जा रही है और सुहेब मकसूद इसके साथ ही बाउंड्री से आगे निकल गए। विकेट के बावजूद ये प्रोडक्टिव ओवर साबित हुआ यहाँ बलूचिस्तान के लिए, जिसमें 13 रन्स बने। लास्ट करने में कामयाब हुए थे अम्माद भट्ट और गेम को रोक सकते थे सुहेब मकसूद अगर डाइव जो है तो लिहाज से बेहतर करते। 100 रन मुकम्मल बलूचिस्तान के 14 ओवरों के इख्तिताम पर। मोहम्मद इलियास ने अपने इकलौते ओवर में 4 रन दिए थे और विकेट हासिल की थी। अब उनको बुला लिया गया है। हल्के हल्के बादल आ गए हैं इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। बलूचिस्तान की टीम रन्स के एतबार से जाहिर है कि ये रन्स का जो फिगर है ये यहाँ ये देखकर उनको खुशी हो रही होगी, लेकिन जो फील्डिंग टीम है उसको दूसरा फिगर देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर ली हैं। मौसम के तेवर भी यहाँ बदलने लगे हैं। मुल्तान में बहुत गर्मी रही है। कल से जब हम यहाँ पर पहुँचे तो खासी जुमे की शाम खासी हद सी, कल शनिचर को भी काफ़ी गर्मी रही। तेवर आज पहले मैच में भी बदले। केपी को पहली
शिकस्त का सामना करना पड़ा सेंट्रल पंजाब ने 25 रन से वो मैच जीता। आप देख सकते हैं कि ये टुकड़ा लगा हुआ है बादलों का सूर्य के सामने, वैसा ही यहाँ पर एक टुकड़ा लगाना होगा हुसैन तलत और अम्माद भट्ट को पार्टनरशिप का, ताकि जो बलूचिस्तान की टीम है एक मोतबर स्कोर बना सके। इनके पास बॉलिंग अटैक खासा खतरनाक है, जो विकेटें लेना जानते हैं। दो रन की कॉल दी है, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस बार सुहेब मकसूद काबिल दाद थे। अच्छी फील्डिंग। एटीएफ सदर्न पंजाब अमूमी तौर पे बेहतर फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं, 2 रन बनाने में नहीं कामयाब होने दिया। यहाँ पे अगर 160 तक पहुंच जाता है बलूचिस्तान तो फिर थोड़ा उन्हें कदरे तसल्ली होगी। इस बैटिंग लाइन को भी बेहतर किया एटीएफ सदर्न पंजाब ने, तो मकसूद की वापसी हुई है। यह बॉलर के हाथ के पीछे मसला दरपेश था अम्माद भट्ट को, क्योंकि हवा तेज चल रही है, सामने जो पर्दा है ये उड़ जाता है साइड स्क्रीन का। अच्छा खेला इस बार, बाउंस को निगोशिएट किया और दूसरा रन भी हासिल किया अम्माद भट्ट के लिए। उनके लिए अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। बॉलिंग में तो पिछले मैच में 4 खिलाड़ी आउट किए, और ये डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 ये टूर्नामेंट 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात में, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, भारत की टीम होगी। और जाहिर है कि इसमें दिलचस्पी ली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हिस्सा है इस DICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा यॉर्कर, आज रिवर्स स्विंग के जो हिंट्स हैं हमने देखे हैं स्विंगिंग यॉर्कर्स के। पहले मैच में सेंट्रल पंजाब के जो बॉलर्स थे हुनैन, आखिरी ओवर में उन्होंने भी अच्छे यॉर्कर किए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं मोहम्मद इलियास। इसी गरज से उनके 3 ओवर्स बचाए थे कप्तान ने। तो स्क्वायर काफ़ी ड्राई है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसका हुनर भी आना चाहिए फास्ट बॉलर्स को। एक अच्छी डिलीवरी होती है यॉर्कर, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। अच्छा शॉट है, लेकिन एक ही लिया जाएगा। तो एक और ओवर जो बाउंड्री के बगैर गया, इससे ज़्यादा खुश हैं मोहम्मद इलियास। 106 पर 5। ये बलूचिस्तान की आप देख सकते हैं कि उनकी पेशरफ्त जो है इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कि विकेटें गिरती रही हैं वक्फे वक्फे से। पहली विकेट तीसरे ओवर में गिरी थी, और फिर पावर प्ले में एक और खिलाड़ी का उनको नुकसान उठाना पड़ा। दोनों ओपनर्स ही पावर प्ले में चले गए थे। असद शफीक आउट हुए थे लेग साइड में शॉट खेलते हुए बाउंड्री पर। तो शान मसूद को LBW आउट दे दिया गया। 70 पर चौथी और 95 पर 5वीं विकेट गिरी थी 14वें ओवर में। तो बॉलिंग में एक और रद्दोबदल, अली माजिद का 1 ओवर बाकी था। पावर प्ले के 3 ओवर इन्होंने किए थे। अच्छी बॉलिंग की थी पावर प्ले में अली माजिद ने। कम देखने को मिलता है कि 3 ओवर्स मुसलसल करा लिए जाएं एक ही बॉलर से शुरू में ही। ओ बोल्ड हो गए। इस बार गेंद खासी आगे गिरी और अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए। लाजवाब बॉलिंग, अपनी रफ्तार से हैरान करके रख दिया अम्माद भट्ट को अली ने।
पहली गेंद पे कामयाबी हासिल की इन्होंने अपने सेकंड स्पेल के, और ये बहुत ही खतरनाक और ख़राब शॉट थी। अली माजिद का गेंद स्किड करता है, तेज़ आता है अंदर, लेंथ भी जो है वो ऐसी थी कि उसको बेहतर था आगे खेलते, लेकिन ऑन साइड पे ज़बरदस्ती खेलने चले गए, इसका नुकसान उठाना पड़ा। अमाद भट्ट 8 रन बना के वापस, 106 पे 6 बलूचिस्तान। सेल्फी टाइम है मुल्तान में, और क्रिकेट के शायकीन के लिए आज बड़ा ही लंबा दिन है। आज पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, और 2010 के बाद आखिरी एशिया कप पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जीता था, शायद 10 साल पहले 2012 में। और एजाज चीमा जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया था, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ सदर्न पंजाब के डग आउट में। आखिरी ओवर उन्होंने किया था। यहीं पे फिनिश होना चाहिए जहाँ पे किया है। एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है फाइनल में एशिया कप के। श्रीलंका भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने अपने पहले मैच हारने के बाद। यहाँ कप्तान अब आ चुके हैं यासिर शाह, इनकी काफ़ी उम्दा बैटिंग करते हैं, लेकिन ओवर्स इनके पास कम है। आखिरी 5 ओवरों का खेल तकरीबन बाकी है। अच्छा रोका जैसे उमर सिद्दीक ने, देखिए विकेट टू विकेट गेंद की, और इसी अंदाज से ही अपनी ज़्यादातर विकेटें लेते हैं, नई और पुरानी दोनों तरह की गेंदों पर। अली माजिद लॉक करने की कोशिश की, लेकिन सामने निकल कर खेला। जीशान अशरफ पहले विकेट कीपर थे सदर्न पंजाब के, वो स्टंप्स के पीछे उनकी बातें हंसी सुनाई देती थी, लेकिन उमर सिद्दीक जो हैं ये खामोश तर्ज के विकेट कीपर हैं, चुप चुप रहते हैं। ये सीने में लगी उमर के, इनके ग्लव्स बोलते हैं अगर ये खुद ना भी बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई दिए गए जितना जीशान अशरफ बोलते थे। इनके वालिद सिद्दीक खान जो बहुत मशहूर अंपायर थे, वो वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी अंपायरिंग करते रहे, टेस्ट मैचों में टीवी अंपायरिंग उन्होंने की। वो यहाँ मुल्तान में इनके वालिद का डेब्यू हुआ था, जो इंटरनेशनल डेब्यू था सिद्दीक खान का। उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल यहीं पर किया था सुपरवाइज। और यासिर शाह ने यहाँ पर कैच ऑफर किया है लॉन्ग ऑन के फील्डर को, जिन्होंने रिवर्स कप बनाया और ये कैच हासिल कर लिया। अहमद आए और जो 12वें खिलाड़ी हैं वो ले गया कैच, और यासिर शाह चलते बने सिर्फ 1 रन बनाकर। इस तरह विकेटें गिरने का सिलसिला ये जारी है। इस बार ज़रा सी हवा दी, पहले तेज़ बॉलिंग कर रहे थे यासिर शाह ने, इसे मौका जाना, लेकिन क्लियर नहीं कर सके फील्डर को। काफ़ी गैर जिम्मेदाराना शॉट था ये, इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, थोड़ा सेटल होते। 1 रन बनाए, सिर्फ 2 गेंदों का सामना इन्होंने किया और कप्तान वापस चल दिए। 109 पे 7 बलूचिस्तान।
कल बलूचिस्तान ने एक बड़ा मुकाबला जीता था सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, और उसकी बड़ी वजह उनके बैट्समैनों ने बड़े तसलसल के साथ और दिलजमी के साथ बैटिंग की थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए नौबत काशिफ भट्टी तक आ गई है। और अभी ये 16वां ओवर है, ये 3 विकेटें बाकी रह गई हैं। अली माजिद ने आज बड़ा काबिल तारीफ उनका स्पेल रहा, 3 विकेटें हासिल की। जल्दी करनी पड़ी और सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी कोशिश की थी, ये उनके उल्टी तरफ थी और वहीं से लिया, मुड़ के थ्रो किया। अगर ये विकेटों पर लगती तो खतरा हो सकता था। काशिफ भट्टी जो शहर में सबसे बड़े एथलीट नहीं है, लेकिन ये खराब शॉट यासिर शाह का। अभी खासे ओवर्स बाकी थे। बेहतर किरदार निभाना चाहिए था यासिर शाह को, जानते थे कि पीछे बैटिंग ज़्यादा मौजूद नहीं है। हुसैन तलत अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं, इनका रहना बहुत ज़रूरी हो गया। यहाँ सदर्न पंजाब के जो स्पिनर्स हैं उनका बोलबाला रहा है। अली माजिद का कोटा मुकम्मल हुआ 3 विकेटों के साथ, और बलूचिस्तान अभी भी मुश्किल में 111 पर साथ। एटीएस सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। 3 विकेटें अली माजिद के हिस्से में आई, 2 सलमान अली आगा कप्तान और एक मोहम्मद इलियास और इमरान रंधावा। काफ़ी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है बलूचिस्तान की लंबी बैटिंग लाइनअप को। Someone is not happy. Guess who? It's the Balochistan captain. They've lost 7 wickets, 113 on board, struggling big time. Yeah, he's momentarily not happy. All that matters is the result. Hussain Talat has got to step up. The whole tournament has been searching for Hussain Talat and his bat, and surely he can. The team needs him today. And he plays that good shot, and that's a catch and a half. What a catch that is. You can't blame the batsman for it because that was hit so well. But today, ATF Southern Punjab is in a different mood. In fact, whole of Punjab is in a different mood since morning. The youngster again, Shahrun Siraj, that was hit hard with some power. Timed the jump perfectly, wonderful. This tournament will go down as the best one as far as the catches are concerned. We see another one by Shahrun. Hussain Talat fought well for 16. It's 113 for 8. Do we need to rethink about the total? Maybe 130 if they can get from here on. They'll be a happy team from here on. Yeah, chase won't be that easy, I'll tell you what. You lose a few wickets, this 130 will turn into 1,130. Can't afford to lose wickets. Pressure on is a different thing. But 113, of course, is not a total that you would fancy defending.
wide, but these things will help. He's still got 3 overs and 4 deliveries after this. Got to add as much as possible. Santhala, the idea was all right. Elevation quite not there. Yeah, that disappointment says it all. It was middled nicely. That's a cheeky smile. He knew that he got away with that. That's the boy on your screen, Sharon. Took an excellent catch. Again, chance. All good. Shan Masood scored only 9 runs. I think that was the reason that Balochistan are in this position, because he's such a key member of this side, holds the inning together. And once he gets out early, it's tough. Hasibullah also has been a very important part up the order. Could not score much. Asad Shafiq looked good, lost his way. Balochistan had a huge side and in trouble. Good Yorker. Everything is going Southern's way. Now the focus is to play 20 overs. Ilyas 2 for 14 into his third. They were having a very important meeting last night over a cup of tea. And now they seem to be having those plans working. He's still having that tea. He's still having it. Shot khela hai. Very nice. And that will go for 4. It is all right, Sikandar. Bit of a mix here. If you look at Kashyap Bhatti and a couple of his performances, not in this one but the longer format, he can bat a bit. He made a few in the previous game as well for the side. If they run hard, can get 2. But they don't want to because it's the last ball. And Kashyap wants to keep strike. 120 for 8. Yeah, troubles up the order. Hasibullah and Asad Shafiq, they're so Balochistan are used to having those good starts. They didn't get it today. 8 score for Hasibullah, 27. Asad Shafiq, Bangalzai struggling, 25. And the rest, well, just Santhala at 16 runs. Nothing to talk about really in that batting card. It's 120 for 8. $18 deliveries still to go. They can still get to that 140 mark. Kashyap Bhatti, he can bat. He's got 100 at first class level. Can he get that? 20 more runs will definitely give the momentum to them. Catch it was the call, but it was nowhere near any fielder. Kashyap Bhatti has hit that hard into the wide long off fence. Yeah, just cleared his left leg. The placement was nice. Just right between the two fielders. No chance whatsoever for any fielder. Yep, he means business. He said, I'm going to do it. Yep, just give the strike to me and I will get it. So those still can get to 140 or 150 to bring back smile on Sikandar's face. He wants a good game. Missing leg.
Very ambitious. Yeah, miles away. You can see the three stumps actually standing next to Kasha Bhatti. Will has bowled well. It is third over, none for 17. He bowled well in the previous game as well. Nicely done. Very nicely done. That really doesn't go down well with a fast bowler. Yeah, how cute was that? Look at that. Waited for it. Just played it right towards that area. So yes, 2 boundaries for Kasha Bhatti. He can play for sure. I don't know if the opposition is finding these shots cute. Yeah, he's a cute player. There we go. Oh, I can't see anything. Yeah, now it's fine. He's got 2 boundaries in the over and 2 dot balls, so he's got a pattern going on. 4-0, 4-0. Should be a boundary now. Or maybe look to get single. Just keep the strike to himself for the next over. Don't want to be exposing Khurram Shahzad. Yeah, so 4-0, 4-0, 4 and then 1. Slow bumper. This works. He's done well. 9 of the 5 deliveries. Khurram Shahzad just needs to defend this one. Or hit it if you want. Why defend? 2 wickets remaining. You don't want to be being bowled out before the 20 overs. Just play out all these 20 overs. Whenever you try to save your wicket, you always end up losing it, or more often than not. Be positive. Obviously with eyes open. Concentration levels, look at that. Watching the ball to the last moment and it goes to the keeper. So Kasha Bhatti will take strike. It's 129 for 8. Hello and hi, back to you. It's awesome to see all ages coming in, just have a good time out. It's not the best of weathers, but a game of cricket is always liked any part of Pakistan. 19th over. It's a wide, but I like the cute way. He's waiting for that ball with a reverse bat and then gently tries to touch the ball. Ambitious. Well, he's better than that. He can hit straight. 130. It's a good bouncer. 1 for the over though, but it was sharp.
Sometimes when a lower order batsman swings his bat and he misses, you always feel, had he touched it, where would it go? Because they just swing it. Could come for two. He wants to, Kashif Bhatti. He wants the strike. That's well stopped in the deep as well. Good fielding. Has to be Hassan Khan. Because, yep, he is. He's very quick. An excellent fielder he is. Look at that. It's right between the two fielders, and that is a wonderful effort. Hassan Khan is a very good fielder. Good batsman, a bowler to have. He's a mix of all three. Every department. Very flexible in playing at different numbers. Good ball that from Randhawa. Into the 130s now, Balochistan just crawling their way. Yeah, they've done well this last partnership. At the moment, 20. Salman Ali Aga is a bit worried at the moment because chasing has not been easy. They were at a very good position, but this partnership, especially Kashif Bhatti, slight chance. They've given them outside chance. If they can get 10 more runs from here on, definitely they'll be in the game. Keeper should take it. It's gone high in the air. And yes, Umar Siddique takes that one. That's number 9 going back to the dugout with the score 133, and it's Kashif Bhatti. Is it Khurram Shahzad? Khurram Shahzad goes for 1. Yeah, no wonder he was not giving the strike to him. A bit of a nothing shot. What was he trying? What was he thinking? Umar Siddique is not going to miss out on those. They've lost their 9th wicket. This time it's Khurram Shahzad. 133 for 9. Junaid Khan, what can he do? He just needs to block these two deliveries and give the last over to Kashif Bhatti. That's the best he can do at the moment. Oh well, Kashif Bhatti is on strike. He crossed, yes. Oh, nicely done. This is 4. This is 4. That is good batting. Very cheeky. He has this habit of playing these shots. Earlier we saw him play that reverse sweep. This time, a conventional one. Boundaries is what matters. Exactly, that's right. That's what matters. And I like the way he's playing as well. He's not going hard at the ball. He's just toying with them, just angling the bat, mostly trying to target the area behind the square. Using the pace well. See, that just drops his bat, takes a single and keeps strike. Smart cricket. 138 for 9. The last man to go was Khurram Shahzad. Just wanted to go big, but there was no planning, there was no thought process behind it. All he did was top-edged it. Umar Siddique making no mistake. Samin Gul has the responsibility to bowl the last over of this inning. He didn't get it on the bat. It won't go to the fielder, but he'll come back for 2.
just went out of his reach. Bowling goalie. Ball balls man. This is a nice little cameo from Kashyap Bhatti. That is expected of him. Coming down the track, fetching it from way outside the off stump. But lucky that it didn't go to Hassan Khan, who was placed for that sort of a shot. Got himself 2 important runs. He's on 25 now. Where he can go, 140 is achieved. 10 more runs will get them to 150. Four balls to go. Been losing wickets regularly. 24, 38, 55, 70, 95, 106, 109, 113, 133. They all follow wickets and regular intervals. A span of 15 runs between each wicket, sometimes less. Never took off with that scoring thing. And yes, when you get Shan Masood and Hasibullah early, and you send that panic. That's very well done. That's very well done. We'll go upstairs, I think. Yes, we are. I wanted to give the strike back to Kashyap Bhatti. He's sure that he's made it. Yeah, by the look it says that he's made it comfortably. Well, direct throws you'd always need to check. Safe. The confidence of Junaid Khan did show that he has made it easily. 142. 3 deliveries to go. How many more can Kashyap Bhatti add to this total? 3 balls to go, at least 2 boundaries. That'll be nice. 3 boundaries will be nice. Or 2. Get around that 150 mark. Just cross that psychological 150 mark. It's not going to be easy chasing. Oh, this lack of speed on that ball. No pace on. Yeah, that's been the order of the day for fast bowlers. Into the pitch, pace off. Any bowler who has done that has survived. Strolling the fingers nicely onto the ball. That is why I say Ahmad Butt will be very crucial on this pitch, because he's the one with all those variations. And as you said, it's not going to be easy chasing down this score, I tell you. And rightly so. He's picked it up, but won't go to the fielder directly on the bounce. Could have pushed for 2. I just get a feeling, but it's his last wicket, so no point, I guess. Otherwise, you probably would think of sacrificing a wicket and getting Kashyap on strike. Nevertheless, this is the last ball of the innings, and Junaid Khan is on strike. ATF Southern Punjab have done well. They turned up, looking good. Fielding as a unit. No misfields, no drop catches. Kept the pressure on. Wicket taking ability good. Last ball. Can get 2. Can get 2. Kashyap Bhatti will get back quick. They've thrown it to Junaid's area, and that's well done. Good, attentive cricket from the man in the deep, who throws at the right side of the pitch, and that is the struggling one. Junaid Khan is run out, but we'll still go upstairs and find out. And that will decide the final score, because he was run out if he is while taking the second run. Presence of mind. Salman Ali Agha knew that Junaid Khan will always be struggling. And he did. That was a good, solid, strong throw. Right in the gloves. That is top cricket. That is a good way to end the innings for Southern Punjab. And that unit that you were talking about, they're all very young, very energetic. And they'll be happy that they've restricted this big side of Balochistan to just 144 runs. And they've bowled them out just on the last delivery of this inning. Yeah, similar games
First match, 193 all out. Central Punjab now. Balochistan 143 all out on the last ball. So this is what happens, as we said. Hasibullah and Shan Masood don't get amongst runs, so the side struggles. 27 from Asad. Bangal Zai gets 25 of 25. And Hussain Talha 16 of 16. The only man who looked a little positive was 27 of 18, Kashif Bhatti, who helped them get to 143. Well, they bowled well as a unit. Ali Majid Shah, 3 wickets, 2 wickets for Ilyas, 2 wickets for Salman Ali Agha. He's been the pick of the bowlers in this tournament for Southern Punjab. Imran Randhawa also getting 2 wickets. They have bowled Balochistan out in their 20 overs for just 143 runs. It's a proud effort. It's a great effort by them. Put into bat, Balochistan, 143 all out. Started off with Asad Shafiq and Hasibullah. They gave an okay start, not a very flashy start in the power play. Got a few runs going, attacking cricket from Asad Shafiq and Hasibullah. But then the spinners started having a say very shortly. And after a couple of boundaries of Ali Majid, this happened. Hasibullah was stumped. Then the game went on both sides. It was sometimes Balochistan's edge, and then sometimes you see the 80 of Southern Punjab bowlers and fielders grabbing wickets. As I said, a span of 15 runs per wicket. That was the gap. Every time it looked that they are getting things sorted, they'll lose a wicket. This was the big one. And then came Ali after a long break. He hit a couple of good shots, but then fell like this at covers. Yeah, Balochistan, they kept on taking wickets. All the boundaries did come. But the good part was the wickets came, and this was a big one by Bangal Zai. It looked good, but as he was just getting fluent, he lost his wicket at a wrong time for Balochistan. Kashif Bhatti did well in the end. And that was a very good delivery by Ali Majid Shah. Surprised him. Alongside Yasir Shah, had to go big, had to go for the runs. They lost the wicket. Hussain Talha was caught brilliantly by young Sharoon Siraj. He's been the tournaments for good catches, and in the end it was Kashif Bhatti's little cameo. He kept his strike to himself. And whenever given the opportunity, he went hard, and this was a very good shot, very cute shot. Khurram Shehzad, he had to go big, could only manage that thick outside edge. Easy catch for Umar. The last one, the last delivery when they were bowled out. Salman Ali Agha, an excellent throw to end Balochistan's innings for 144 all out. .145 to win at 7.25 runs and over, 80 of Southern Punjab's target. We'll be back.
warm welcome back to Multan, the city of saints. This is Bahauddin Zakaria, the shrine, also known as the Darbar of Bahauddin Zakaria. It was created in 13th century. Wonderful piece of architecture, history, and heritage for this part of the world. Very neatly preserved over the years, over the centuries and decades. And this is Multan Cricket Stadium, Kingdom Valley National T20 Cup, Balochistan versus ATF Southern Punjab, coming to you from Multan Cricket Stadium. Well, slightly below par on the face of it, 144 there for Balochistan. Lackluster beginning, wickets kept falling at regular interval, no partnerships of note. 27 from Kashi Bhatti has really given them an outside chance. Ali Majid was the pick of the bowlers, 3 for 27. He bowled 3 overs in the power play. Muhammad Ilyas, another wholehearted effort, 2 for 19. Wickets for Agha and Imran Randhawa as well, as Balochistan's innings never really kicked into the top gear. Bit of a cloud cover for once here at Multan Cricket Stadium. I hope the players will welcome the change because it has been absolutely boiling hot for the first couple of days. ATF Southern Punjab needs 145 to get themselves 2 valuable points. Run rate at 7.25. And once again, a very good evening to Sikandar Bakht. Good evening, sir. You say about 144, 145 won't be a walk in the park, I tell you that. Yasir Shah and his men will put all their resources available to defend this, and we've been watching that the spinners are gripping on the surface. Yasir Shah will use his experience. Then the medium paces of Ahmad, but if they can get good 2 wickets in the power play and probably get the wicket of Zain, then we are talking. 2 left-handers, Umar Siddiq making his first appearance, and informed Zain Abbas will have their job cut out. They try to score as many as they can with the new ball, with the ball sliding on a bit better at the back end of another very hot day. But Balochistan has 2 spinners. Ahmad Butt also has a bag of tricks, so does Hussain Talat. But the quicker man would have to come up with the breakthroughs to put the middle order under pressure. Zain Abbas, a strike rate of 117. He's really hit purple patch in the last few games. Umar Siddiq is a very, very talented cricketer. This is his first appearance. He was nice and tidy behind the stumps. Nothing new about Junaid Khan. We know what we can expect from him. With a new ball, he's still very good. If he can get that ball, he has this delivery that shapes into the right-handers. For the left-handers, it goes away. Early good lengths, good seam positions will surely test the openers. This is that kind of a score. We just don't know what pace to chase it at. Should you take it very easy, or should you go all guns blazing as if you're chasing a 190, 180? It can always put you in a bit of a fix. A bit of a breeze as well, that would help Junaid's outswingers. Plays the call. Shout is very nice, very good, come on. Oh, that was mighty close. That was very close. Cross-batted shot. His knee was bent. Interesting to see where exactly it struck him. I don't think there was any issue with the line. Junaid's angle, left arm over. Pretty close to the stumps, wicket to wicket. Hit him on the knee roll. Wow, he could count himself. Very, very lucky. Umar Siddiq shows a brother
called into action straight away. Two and two. Once again, it hit him below the knee roll. Junaid Khan was absolutely pleading with umpire Shozab. That was sliding down the angle. This was a good one from Shozab. Finally got put bat to ball and off the mark. Nervy start from Umar Siddiq. Thank you. In the air. Junaid is really asking tough questions. This on another day could easily have been given out. That was sliding down. Zain should consider himself, Umar Siddiq should consider himself very lucky. No, I'm telling you. Both these shouts were very good shouts. And he has this ball straightens up, slightly moves away from the left-hander. This time he's going to be runs here. Excellent start from Junaid Khan. It's exactly what Balochistan needed. With a bit of a luck, they could have had Umar Siddiq back in the hut. That's the kind of start Balochistan would have hoped for. But, like Sikandar was mentioning, is not a walk in the park, this total. On this pitch, is the 4th innings of the day. Well. Going upstairs. Has he been caught napping? He seems to be all right. Lots is happening in this over. We've gone upstairs, so we won't call it an over yet. Third umpire in action. He looks okay. He's just planted his bat at the correct moment. Go to the big screen, and it's not out. End of the over. 3 for none. Okay. 3 for no loss. 2 slips in position for Khurram Shahzad.
सेंटर भी इतना ही माइनस आगे करना है स्लाइडली ज्यादा हो गया थोड़ा सा आगे वापस From Shehzad is also very good with the new ball. Generally bowls the away swinger to the right-hander. Still got a slip in a gully. Balochistan on the attack. Sikandar mentioned when you're chasing this kind of a total, don't know if you want to go too hard or you just take it easy and you have a feeling you can catch up at any given time. But a few good overs in a row can really put the pressure back on you. And if you lose wickets in the process, the job is even tougher. That's very well stopped at cover. Short cover. Was surely a boundary. Just ended up in a single. On the up, not a half volley by any means. Asad Shafiq, the veteran, still prepared to throw himself around in the field. Nicely picked up in the air, and Shan Masood can't cut it off. The first boundary of the innings. Too straight on that occasion. Zain Abbas, good use of the wrist. Very prolific in that area. Just away from Shan Masood. For a moment you thought he was in the game. Just 10 or so yards away from him and over the fence. Yeah, the bowler's got to blame himself. He's got two slips from the captain. Now it's one. He's got a ball on the fourth, fifth off stump, or just around that area. That's more like it. Runs here, but that's more like it in terms of the zone you want to target. Wasn't terribly bad delivery, but Zain Abbas has got himself into such good form. Picked up the length, slightly shorter. I've seen a lot of any away swingers asking Zain Abbas to drive. Try to draw him on that front foot because it looks like he's hanging on that back foot. And slightly back of a length gives him enough time. It's more like it. 2 done, 12 for none. Junaid Khan will continue. Junaid bowled a brilliant first over, had two very strong shouts. I found them mighty close. There's the first one. The second one was even louder. Look at that. Shows the brother no on both occasions. बॉलिंग भैया कम ऑन यार बैक करे बॉलर को बैक करके शाबाश It's getting a bit dark out there. It's cloud cover. It's not a huge cloud cover, it's just where the sun is. Breeze has picked up as well.
feel it's ideal conditions for seam bowling. Picked it up nicely. Fielder is there. Ooh, Ahmad Bhatt did well, almost overshot his target. It's getting a bit breezy as well, isn't it? I'm sure players will welcome the change in weather. That breeze. Let's look at Zain Abbas's tournament. Ever since he scored that 65, he followed it up with an 81 and 48. There's a strong breeze blowing and that will help Junaid Khan. It's coming from left to right from where Junaid Khan is bowling, so that helps him to move the ball away from the left-hander. And it's a strong breeze that suddenly started blowing. You can see that. Attacking cricket, that's more like it. Down the wicket, meeting the ball early. Boundary. Junaid had bowled one bouncer off the over already, so Umar Sadiq preempting the length ball. He advanced and met the ball nice and early. Picked his spot, was aerial but was in the gap. It's good cricket from Umar Sadiq. They need a few boundaries going. At the same time, you got to be careful. If you're batting from the other end, Faisal, if you hit it straight, you're hitting into the breeze. Got to be careful about that because these boundaries are big. Absolutely. These little things need to be kept in equation. More evidence of that breeze. That's at the ground level. But further up at the top of the Inzamam Haq Pavilion, you see there's pretty strong wind. Cracking stroke, but straight to the fielder. Unlucky Umar Sadiq. He really crunched that one, but straight to the fielder. 3 done, 18 for none. Zain Abbas, he's in good form, neat and tidy strokes. There's some of his strokes. That was at Rawalpindi where he hit form and then he continued with it. That's the sign of a good player. When you hit the purple patch, you made the most of it. It can very easily desert you. That is Rawalpindi, and he well and truly enjoyed the true pitches over there. Fresh challenge here at Multan. Talking about neat and tidy stroke play. You can see that helmet. The logo very neatly tucked in. Looks good. We watch. Slower delivery. Just hit him high. We get a chance to see what Umar Siddiq has got on his helmet. When he gets on strike, you will see this. You can't call that neat and tidy.
This is exactly what I was talking about. Look at that. The peak of that cover on the helmet is not neatly tucked away. Doesn't really show very nicely. It's not tucked away at all. Forget neatly. But that's it's just, I guess, individuals. It's not just about any product. It's individuals. Sometimes your helmets are coming in 3 different sizes, and the covers could be one size. But yeah, I get it what you're saying, and it also can be a hindrance for you in your eye line at times. Something that's flapping on your visor with a strong breeze at the inside edge. The ball never carried to Hasibullah. More evidence of pace going out of this pitch. Just getting lower and lower as the day has progressed. Hot sun has been beating down on it even yesterday, because it was out without covers for the first time in the season. Remember, yesterday was the first day of the season here at this venue. So all that heat has really taken the pace off. That's why this total may not look as big on the face of it. Still something worth fighting for Balochistan bowlers. Need a wicket here, Balochistan. That's in the air and they'll clear. He's just shuffled across a little bit, Umar Siddique, and then played it with such ease. No chance for Shan Masood at deep square leg to even bother touching it. Has gone with the wind. You look at that, barely hit it. For a moment it looked like it came off the top edge, but it didn't. But look at it, just travel, just fell over the hoardings. Quite a big hit without much force. Certainly the wind aided that delivery go over the fence. Good option from Umar Siddique. That's well done. A 6 and a single. Give a taste of everything to the opposition. Coming back to that cover on the helmet. Sometimes as a player it gives you a lot of confidence with your gear. If you're very neat and tidy, it does give confidence to certain players how they look. And Umar Siddique, the stroke play is neat, there's no doubt about it. He's already shown enough evidence of that, and we know he's played PSL. Really can be a good addition to this ATF Southern Punjab batting lineup. Foregone, 28 for none. नया ओपनिंग पेयर एटीएफ सदर्न पंजाब का अभी तक अच्छा लगा है इन इब्तदाई ओवर्स में। जैन अब्बास मुसलसल रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। उमर सिद्दीक ने अच्छी झलक दिखाई है अपने बैटिंग टैलेंट की, और इस बार भी उठाकर खेल दिया। गेंद मिड ऑफ के बाएं जानिब से होती हुई बाउंड्री के पार चली आई। एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और एफर्टलेस स्ट्रेट ड्राइव उमर सिद्दीक का। यहाँ बहुत ही स्टाइलिश शॉट है ये, और हैरानगी वाली बात यह है कि उमर सिद्दीक इस टीम में पहले शामिल नहीं थे। टीम स्ट्रगल कर रही थी और इनकी वापस आने से एक नई एनर्जी, एक नई जान आ गई है। जिसकी विकेट कीपिंग की उन्होंने और अब बैटिंग में जोहर दिखाते हुए 21 रन्स पर पहुंच गए। बहुत ही नीट प्रॉपर क्रिकेटर हैं ये। 32 रन्स पर पहुंच गए। बहुत शानदार आगाज है ये, ऐसे ही आगाज की तवक्को कर रहे थे सदन। फिर बैकफुट पर खेला, दूसरे रन के लिए वापस जाना चाहते हैं, लेकिन
अम्माद भट्ट ने फुर्ती दिखाई, खासा फासला तय करके वो गेंद तक आए और फील्डर की जो बदन बोली होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है जब वो गेंद की तरफ आता है, और बैट्समैन की भी। ये देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, और कोई मौका नहीं, मुकम्मल इख्तियार में थे जब ये शॉट अटेम्प्ट किया उमर ने। या सबसे बेहतरीन बात उनका बैलेंस था जब शॉट खेली उन्होंने, और यही क्वालिटी है उमर सिद्दीक की। बादल अब और ज्यादा गहरे हो चले हैं, रोशनी कम हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि बैट्समैन अपने शॉट्स ना खेल सकें। दोनों लेफ्ट हैंडर्स इस वक्त जारहाना मूड में नजर आते हैं, हवा में शॉट खेलने से बिल्कुल इज्तनाब नहीं कर रहे। उमर सिद्दीक ने मिड ऑफ पर चौका लगाया और जैन अब्बास ने वाइड मिड ऑन पर यही किया, जहां वेट किया, और यही सही तरीका है, सीधा खेलने गए थे। बहुत ही शानदार आगाज है ये, और आज का दिन पंजाब की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन रहा है, और ऐसा लगता है कि सदर्न पंजाब ने भी अपना जो कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो सही कर लिया है, और उमर सिद्दीक के आने से और बेहतरी आ गई है इस टीम में। और जैन अब्बास तो शानदार फॉर्म में है ही। 108 रन 93 बॉलों पे और करने होंगे सदर्न पंजाब को, और शायद थोड़ा जल्दी भी करना होगा, क्योंकि जैसे ये पूल खुल रहा है आपको नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा। और अब ये जिस तरह की इब्तिदा हो गई है, इसके बाद ATF सदर्न पंजाब को ये मैच हारने के लिए बहुत ही बुरा खेलना पड़ेगा। विकेट अभी भी बैटिंग करने के लिए सहल है। कल शाम के मैच में हमने देखा था कितनी आसानी के साथ खुद बलोचिस्तान के बैट्समैनों ने मैदान मार लिया था, उनको भी उम्दा आगाज फराहम किया था हसीबुल्लाह खान ने। अच्छा, अगर आप सदर्न पंजाब की बैटिंग लाइनअप पे नजर डालते हैं तो मां सिवाय अली माजिद शाह और समीन गुल के बाकी सभी बैटिंग कर लेते हैं, तो 9 बैटर्स इस टीम में शामिल है। ये अच्छी एफर्ट है बंगल जी की जानिब से, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। तो जब आपकी टीम में 9 बैटर्स शामिल हो तो आप 106 रन तो आपको चेस करने चाहिए। मैं ये बात इस ज़िम्न में कर रहा था कि नॉर्दर्न के खिलाफ 111 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, और उसके बाद ये टीम अपने हदफ तक नहीं पहुंच सकी थी। तकरीबन जीता हुआ मैच इन्होंने हार दिया था। उस दिन की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल नजर नहीं आई थी। पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन 1 रन मिल गया। इस ओवर में खासी पिटाई हुई। खुरम शहजाद की 12 रन देकर जा रहे हैं। 5 के बाद 40 पर कोई खिलाड़ी आउट। खासी तेज हवा चलने लगी है और आसमान पर गर्ज सा छाया हुआ है। उमर सिद्दीक और जैन अब्बास ने इनिंग्स का आगाज़ किया। हसन खान बैटिंग करते हैं। समीम गुल जो हैं ये भी ज़रूरत पड़ने पर कुछ बैटिंग कर सकते हैं। अली माजिद, मोहम्मद इलियास जो हैं वो चौथे नंबर पर भी खेलते रहे ATF सदर्न पंजाब के लिए। अम्माद भट्ट इनको अपनी बॉलिंग जारी रखना है एक महंगे ओवर के बाद। लेकिन देखना यह है कि ये अगेंस्ट द विंड जब आएंगे, इतनी तेज हवा चल रही है, तो यहाँ कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो बाल बचे, थ्रो विकेटों पर लगती तो खतरा हो सकता था। जी शायद इसी वजह से थोड़ा जल्दी में भी लग रहे हैं, इससे पहले कि बारिश का कोई ऐसा सीन बने आपको ये रन चेज कर रहे होंगे।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैटर्स की जानिब से, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है क्योंकि बहुत अरसे से दोनों इकट्ठा खेल रहे हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं, अंडरस्टैंडिंग है। आगे जिक्र कर रहे थे मोहम्मद इलियास का, तो दो प्लेयर्स ने बहुत डिफरेंट रोल निभाए हैं। आगा सलमान एज अ बैटर हैं लेकिन वो आउट कर रहे हैं, मोहम्मद इलियास एज अ बॉलर खेल रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर रन्स कर रहे हैं। तो ये ही बड़ा कंट्रास्ट है इस सर्दन की बैटिंग लाइनअप में। शानदार शॉट खेला, इस बार गेंद विद द विंड गई और कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए। लाजवाब बैटिंग उमर सिद्दीक, इनके मुतालिक अब सब जानते हैं कि बड़े बासलाहियत हैं और आज वही कोई देखने को मिल रहा है एक बार फिर बिला कोशिश। जी हाँ, बहुत ही कमाल का शॉट है ये, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बैलेंस बहुत शानदार रहता है जब भी सीधा खेलने की कोशिश करते हैं उमर सिद्दीक, और एक नई जान सी आ गई है उमर सिद्दीक के आने से सर्दन पंजाब की बैटिंग लाइनअप में। बहुत ही सॉलिड और फॉर्मिडेबल प्लेयर हैं ये, और ऐसा ही एक प्लेयर की जरूरत थी सर्दन पंजाब को। चार और बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं, गेंद बहुत बाहर थी और अगर उमर सिद्दीक को आप इतनी विड्थ देंगे तो फिर ये बुरी तरह पेश आएंगे। जम ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक मारते हैं और यही खासियत है इस प्लेयर की। ये देखिए वेट किया, ज्यादा जल्दी में नहीं रहे और प्लेसमेंट भी कमाल करी, थोड़ी मूवमेंट जरूर दिखाई, थोड़ा चांस दिखाया बॉलर को, और बॉलर के साथ खेलते हुए दोनों फील्डर्स के दरमियान से 4 रन हासिल किए। कमाल की बैटिंग जारी है उमर सिद्दीक की जानिब से। लगता है चेहरे से कि वो हर्ट हैं क्योंकि पहले टीम में शामिल नहीं थे, और यही तरीका है रिप्लाई करने का, अपने बल्ले से, और सही तरीके से कर रहे हैं। सेकंड 11 से आए हैं, क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, यही सही तरीका भी है, यही सिस्टम है। एटीएफ सदर्न पंजाब ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट 11 में रन्स नहीं बना पाते या अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो आप सेकंड 11 में जाते हैं, वहाँ खुद अपने आप को एक बार मनवाना पड़ता है, और यहाँ इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने खुद को मनवाया। 50 रन 5.4 ओवर्स में बनाकर जितनी हवा चल रही है इस वक्त इतना आसान नहीं है अमाद भट्ट के लिए बॉलिंग करना। आहिस्ता गेंद फेंकी, जहाँ हमने देखा जो भी बॉलर इनटू द पिच कर रहा है, कटर्स कर रहा है, वो थोड़ी उसकी बचत हो रही है। लेकिन अगर आप पेस से बॉल करेंगे तो जैसे उमर सिद्दीक खेल रहे हैं, इस बार तो ज़ैन अब्बास थे लेकिन उमर सिद्दीक से बचना मुश्किल होगा। काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड है अमाद भट्ट से, क्योंकि ये इनके सबसे बेहतरीन बॉलर साबित हुए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बॉल करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे लोकल हैं बड़ी हद तक अली, तो ये जो गर्द के तूफान आते रहते हैं मुल्तान में, तो ऐसे में बॉलर और फील्डर्स के लिए ज्यादा मुश्किल है बैट्समैन की निस्बत। और इस बार उठा खेला, गेंद चली जा रही है, एक टिपक आती हुई बाउंड्री पार पवेलियन के सामने, और बाउंड्रीज दाएं बाएं सेंटर सभी जगहों से आई हैं एटीएफ सदर्न पंजाब को। दोनों बैट्समैन शाना बशाना खेलकर स्कोर को 54 तक ले गए। जी हाँ, बॉलर्स और फील्डर्स का तो मालूम नहीं, लेकिन बैटर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। ये भी बॉल स्लॉट में था, जब मिड ऑफ सर्कल के अंदर होगा तो ये आसान शॉट है। यहाँ पे लेंथ बहुत कमाल की रही बैटर के लिए, और दोनों ऐसा लग रहा है दोनों एक रेस में है कि कौन ज्यादा रन्स करता है और कौन ज्यादा खूबसूरत शॉट्स मारता है। यहाँ पे 6 ओवर्स में 54 रन बना लिए सर्दन पंजाब ने बगैर किसी नुकसान के। जी 20 रन आगे एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम। 6 ओवर्स के बाद खेल को अगर यहाँ पर रोका जाता है, अंपायर ने मुअत्तल जरूर किया है कुछ देर के लिए, क्योंकि
ये गर्द का तूफान आ पहुंचा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। गर्द, गदा, गर्मा, गोरिस्तान, ये 5 अनासर ये मुल्तान की पहचान है। ये भी मुल्तान की, सदर्न पंजाब की इस टीम की पहचान है। ये हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा तूफान मुल्तान में अक्सर आता है क्योंकि सहरा है इर्द गिर्द, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का सैंड स्टॉर्म मुल्तान में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत तेज़ हवा है, तो हम होप कर रहे हैं कि ये चलता बनेगा। अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो वनडे मैच था उसमें भी ऐसी सूरत हाल थी। ये देखिए पावर प्ले में जो दोनों ओपनर्स से फुल खेलने में कामयाब हुए, खातिर में नहीं लाए पेसर्स को। गेंद बेहतर बल्ले पर आती रही, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया। खासतौर पर उमर सिद्दीक, उनके ये शॉट्स काबिल दीद थे, कट लगाने में भी कामयाब हुए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है इस वक्त आंधी चल निकली, तो ऐसे में बिल्कुल भी आसान नहीं है एक्शन को जारी रखना, और हमारे प्रोडक्शन क्रू के लिए भी जारी रखना आसान नहीं होगा। तो यहाँ एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे से पहले ये हाथ के हाथ आप देखिए उमर सिद्दीक और जैन अब्बास ने जिस तरीके से पेशकदमी की है। 6 ओवर्स मुकम्मल हुए और सिर्फ एक फालतू रन 54 रन में शामिल है। अभी सुहेब मकसूद, सलमान अली आगा, शारून, यूसुफ बाबर जैसे खिलाड़ियों को बैटिंग करने के लिए आना है। हसन और रंधावा और राउंडर। बॉलर जो हैं वो खासी हद तक बेबस रहे। 4 बॉलर्स को यासिर शाह ने आजमाया। अभी वो खुद गेंद लिए आए थे कि खेल को रोक देना पड़ा। जुनेद ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए, लेकिन खुरम शहजाद और अम्माद भट्ट वो 4 ओवर में 44 रन देकर गए हैं और विकेटलेस रहे हैं। यहाँ तो यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ताजा तर के साथ हाजिर होंगे।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुछ देर पहले यहाँ पर गर्द का तूफान आया जिसके सबब एटीएफ सदर्न पंजाब की इनिंग्स को मुअत्तल करना पड़ा। पावर प्ले खत्म होते ही 54 रन बने थे। उमर सिद्दीक और जैन अब्बास बड़े आला अंदाज में इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे कि खेल को रोक दिया गया। जुनेद खान ने 2 ओवर्स किए, उन्होंने 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। खुरम शहजाद और अम्माद भट्ट ये महंगे साबित हुए और इनके 4 ओवर्स में 44 रन बनाए दोनों मुखालिफ ओपनिंग बैट्समैनों ने। और दोनों अंपायर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं डीएलएस के तहत 20 रन से एटीएफ सदर्न पंजाब को इस मैच का विनर करार दिया गया है। उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 144 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए बलोचिस्तान ने और जवाब में बड़ी उम्दा बैटिंग की उमर सिद्दीक ने, इसीलिए कामयाबी ने एटीएफ सदर्न पंजाब के कदम चूमे। तो आज के इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच कौन है, इसका फैसला हो रहा है। सिकंदर बख्त की तरफ आपको लिए चलते हैं। Thank you, Tariq. And here is the post-match presentation of match 20 of Kingdom Valley National T20. It's been an eventful day. We've had lots of runs and eventually a thunderstorm, and clouds are still rumbling. We just hope we don't get rents. We'll try to get done with this presentation as quick as possible. I'm going to welcome the guests here, starting from my right, Mr. Ali Tareen on behalf of ATF Southern Punjab. Thank you for joining us. And next to him is Mr. Mohammad Noman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Welcome to you as well. Moving on to the Kingdom Valley player of the match, and the trophy and the 25,000 rupees check will be presented to the man who's got figures of 3 for 27, Ali Majid. He'll receive the check from Mr. Noman Ashraf for his 25,000 rupees, Kingdom Valley player of the match, and he will be handed the trophy by Mr. Ali Tareen for his brilliant performance, 3 for 27 today, playing an important role in getting ATF Southern Punjab their valuable 2 points. We'll speak to Ali Majid. Ali, आपकी बॉलिंग वैसे बिग स्क्रीन पे या बिगर स्टेज पे देखी पीएसएल में, और अभी भी आप कराते हैं। मुझे अभी तक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कभी सीम अप आप करा देते हैं, कभी मीडियम पेसर की तरह, समटाइम्स यू स्पिन द बॉल बोथ वेज। नए बॉल के साथ आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ने मुझे यानी कि इज़्ज़त दी, मैन ऑफ द मैच मिला। और सर जो भी कंडीशन हो मैं उसमें 100% करने की कोशिश करता हूँ। और विकेट जोन सी भी हो उसमें ना आपकी अगर लाइन और लेंथ अच्छी है तो उस पर हिट लगना मुश्किल है जी। आज पहला मैच मुझे मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन स्पिनर को थोड़ी हेल्प मिल रही थी, ग्रिप मिल रहा था सरफेस में। आपने कैसा पाया इसको? जी बिल्कुल, विकेट को पहले ओवर में ही पता चल जाता है कि विकेट में क्या हो रहा है। तो आपकी लेंथ और लाइन और लेंथ अच्छी होगी तो वो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। ये वैसे मेरा एक सवाल था, मैं ऑब्जर्व करता, लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बॉल करना या राइट हैंडर्स? राइट हैंड को। राइट हैंडर्स। चलिए, कंग्रेचुलेशंस, बहुत मजा आया आपकी परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। 3 for 27, Ali Majid, the player of the match. Now I'll call on the captain of Balochistan, Yasir Shah, to please come forward. We'll have a few words. यासिर, कल की परफॉर्मेंस के बाद अगर आज की इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो लगता है कि टैंक में फ्यूल कम था टीम की। ये कि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज मुझे आज लग रहा था हमारे प्लेयर्स का कि थोड़ा सा डाउन लग रहा था, या तो रिलैक्स हुए थे या जो भी था, लेकिन हमने इस विकेट पे ये रन्स कम किया, हमें 20 रन कम किए इस विकेट पे। ओवरऑल क्या ये वजह हो सकती है, बैक टू बैक मैचेस हैं, हालांकि प्लेयर्स तो सारे प्रोफेशनल हैं, लेकिन जो एक प्रेशर होता है इस हीट में वापस आना, फिर से वही परफॉर्मेंस देना उस इंटेंसिटी से? ये कि मुश्किल होता है, रोज़ाना मैच खेलना मुश्किल भी होता है, और ये कि गर्मी भी है तो थोड़ा सा होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो एक्सक्यूज़ है, हम प्रोफेशनल है, हमें यहाँ पे अगर मैच खेलने आए तो हमें पूरा देना चाहिए, 100% देना चाहिए। टॉप ऑर्डर आपका परफॉर्म कर रहा है, बंगल से भी बैट से रन कर रहे हैं, शान मसूद भी आज नहीं कर पाए, क्या ये वजह आपको लगती है कि थोड़ा सा पैनिक आया, लोअर ऑर्डर पे जब जिम्मेदारी आई? नहीं, हम कि एक बैट्समैन हम रिलाई नहीं करते और हमारे सारे बैट्समैन अच्छे हैं, तो बस ये कि सम टाइम बैट्समैन क्लिक करते, सम टाइम नहीं करते, तो आज हमारे बैटिंग उस तरह नहीं खेली जिस तरह हमारी बैटिंग है। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। कैप्टन यासिर शाह, बलोचिस्तान। नाउ विल कॉल अपॉन सलमान अली आगा, द कैप्टन ऑफ ATF सदर्न पंजाब। इंपॉर्टेंट था जीतना पहला मैच एट होम, थोड़ी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। पिंडी की जो परफॉर्मेंस रही, अप्स एंड डाउन्स रहे, उसको बिल्कुल इरेज करके आए हैं, लेकिन या साथ कुछ लेके आए हैं?
नहीं, ऑब्वियसली जो 6 मैचेस थे वो गुजर गए। बात यही मीटिंग में यही बात की थी कि वो 6 मैचेस गुजर गए क्योंकि उनका हम अब कुछ कर नहीं सकते, तो फ्यूचर में देखना चाहिए, पास को बिल्कुल ऑब्वियसली रेस करना चाहिए। तो कोशिश यही की थी कि बिल्कुल नए माइंड से इन 4 मैचों का सोचें और स्पेशली कि मैच बाय मैच सोचें, तो इसी मैच में सब कुछ रेस करके आए। क्या ऐसा डिफरेंट रहा आज जो बलूचिस्तान के खिलाफ जो बॉलिंग हुई, आपने क्या ऐसा चेंज लेके आए हैं अपने बॉलिंग के उसमें कि आपने इनको रिस्ट्रिक्ट किया और ज़्यादा रन नहीं करने दिए? ऐसा कुछ स्पेशल चेंजिंग नहीं थी, लेकिन कोशिश यही थी कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल करें, जो ऑब्वियसली एक प्लान हम लेकर आते हैं बॉलिंग कोच के साथ या हेड कोच के साथ, तो कोशिश यही रहती है कि वही मैच में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो आज थोड़ा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ ग्राउंड में। आप बॉलिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल। एंजॉयिंग योर बॉलिंग आउट देयर? जी ऑब्वियसली, एज लॉन्ग आई एम कंट्रीब्यूटिंग फॉर द टीम आई एम हैप्पी। आपको मालूम है कि आप अकेले ओनली कैप्टन हैं टू हैव दोस फिगर्स, 3 overs 10 for 5 आई थिंक। यस, जी बिल्कुल। वो मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि तेरे दुनिया में काफ़ी जो स्पिनर्स हैं उनसे अच्छे वो फिगर्स हो गए हैं, लेकिन मैं उस टाइम में बैट्समैन नहीं हूँ, स्पिनर नहीं हूँ। चलिए, as long as you enjoying bowling, it's well done. Thank you. Congratulations on that. Thank you. So ATF Southern Punjab get their win, they get their 2 points, and that concludes the presentation. जी हाँ, तो अब ये सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा ने 6 मैचेस खेले, आज पहली शिकस्त का मज़ा उन्होंने चखा और सेंट्रल पंजाब की टीम ने हैरान कुन तौर पर उन्हें अपसेट किया। बलूचिस्तान की ये तीसरी नाकामी थी, उनके 8 पॉइंट्स हैं, अभी भी उनकी दूसरी पोजीशन है। ATF सदर्न पंजाब की टीम ने सर उठाया है और अपने पॉइंट्स 6 किए हैं आज की कामयाबी के बाद। सेंट्रल पंजाब के अब 4 पॉइंट्स हो गए हैं। सूरत हाल बहुत दिलचस्प होती जा रही है जहाँ तक सेमीफाइनल की दौड़ का ताल्लुक है। तो आने वाले दिन जो हैं वो और भी ज़्यादा काबिल दीद होंगे। कल से नया दिन है और नए औकात कार होंगे मैचेस के। 21वां मैच खेला जाएगा जिसमें सेंट्रल पंजाब और मुकाबला होगा खैबर पख्तूनख्वा का, और ये दोपहर 3 बजे होगा। और उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध की टीमें आमने सामने होंगी और ये मैच शाम के वक्त आप बराह रास्त देख सकेंगे। तो आप मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से आज के लिए इतना ही। तारिक सईद और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। Down the track, goes hard on it. और शानदार शॉट, स्मैश कर दिया। That's going to be a 4. 3 से ही खेलना चाह रहे थे, एक और छक्के की ताक में अपनी विकेट गवा बैठे। बोल्ड हो गए। And that will go 4. Keeper should take it. It's gone high in the air. In the air, and Shan Masood can't cut it off. That's in the air and that'll clear. और इस बार भी उठाकर खेल दिया। ATF सदर्न पंजाब ने 50 रन मुकम्मल कर लिए।